Alright, so we are live from the listener.pk's account, and I am going to wait for our today's speaker to join us so that we can begin right away. So we do have Hira over here. Just a minute. Hira, can you please send us a request so that I can get you in? Alright, I do see a request. Accepting it right away. Hira, can you please send the request again? I'm unable to accept. Alright, I guess that. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum, Mariam. How are you? I'm good. How are you? I'm fine too. Can you hear me properly? Yes, I can. Can you hear me properly? Yeah, I can hear you. Alright. So I guess we'll wait for a few more people to join and then we can start after that. Sure. So how are you? I'm fine. Today is Friday and the weekend is going to be over and the vacations are going to be over. So my son is going to have his school started on Monday. So It must just have been hectic. I can imagine. occupied with his school stuff. Alright. So I guess we do have people joining in, so we should start with the session. Sure. Yeah. Alright. So we'll start with the introduction. So I'll just say a few things I know about you, and if there's anything you would like to add, please go ahead. Okay. So our today's guest is Hira Jamil. Hira is a certified psychologist. She has worked as a child therapist. She has ample experience in various domains in clinical psychology, and she is also a counselor. So बहुत शुक्रिया. Thank you so much for joining us for the session today, Hira. If there's anything you would like to add in the introduction. No, it was enough. But I just want to say that it's been 10 years in my practice. I did my MSc in clinical psychology from Punjab University back in 2013. And now my MSc in process, due to some reasons, I could not continue. But now I have resumed my MS and MPhil. So yeah, that's it. And it's been 10 years. It's almost a decade in my practice of counseling. Yeah, that's the thing. Like that. So jumping towards our today's topic, Hira, can you hear me? I guess we have some sort of connection issues. Are you still there? Mariam, can you hear me? Yes, Yeah, I I'm can. here. हाँ जी, मेरे ख्याल से कोई connection issue था. Gigi. Is it okay at your side now? Yeah, that's perfectly fine. All right. So we'll start with basic. हमारा आज का जो topic है वो social causes that lead to depression in women. कि जी. ऐसे कौन से social causes हैं जिसकी वजह से औरतों में depression बढ़ता है या depression start होता है. So अब बहुत basic से start करते हैं हम depression से कि what is depression? क्योंकि we basically see a lot of people using the term depression in their everyday life. But what we see today is people are not really aware of what depression actually means. So how would you define depression? There would be a bookish definition of it, and there would be a relatable definition what I saw people experiencing and what I through my personal journey as well. So अगर मैं बुकिश मटेरियल की बात करूँ जो मोस्टली लोग सुनते हैं, it's kind of a like mental illness that's affecting negatively how you feel, how you react. It's affecting your lifestyle. Basically, it's sort of mental illness impacting your personality negatively towards everything, towards your emotions, towards your reactions, towards your action, and all of your personality. लेकिन अगर आप मेरे से बात करें कि what is depression, if you ask Hira Jamil what is depression, I would say in a one word, a trigger. It can be one trigger, it can be the combination of so many triggers, right? You know, that can take the form of sadness, sorrows, grief, and like you wanted to achieve something and you now you're in that state that you cannot get it, and you're in some phase that you are unable to overcome that thing, and there you're lost, and there that's affecting your eating habit, that's affecting your sleeping habit, you lose interest in socialization. So that's it. If you ask me what is depression, so I will say it's a trigger
or the combination of triggers that affecting your lifestyle. All right. So, Hira, do you think there's any difference between depression men and depression women? कि औरतों और बंदों के depression में कोई difference होता है या it's same? मरियम, if you ask me, symptoms are same. जैसे कि मैंने अभी symptoms की बात की थी कि हमें एकदम से नहीं पता चलता कि हमारा क्यों इंटरेस्ट लूज हो गया है खाने पीने में, सोशलाइजेशन करने में, जो चीजें हम पहले पसंद करते थे, ट्रैवलिंग, समथिंग. Symptoms are same, but reaction is different in men and in females. Women. बायोलॉजी कहती है कि women's जो कि genes हैं, they are more likely to express themselves. और साइकोलॉजी कहती है women are likely to be diagnosed twice as compared to men. अब जो रीजन है कि जो हमारे यहाँ एशियन कंट्री की अगर बात करें, एज वी बिलोंग टू एशियन कंट्री, तो अगर हम इसकी ही बात कर लेते हैं तो लाइक हम जो खवातीन हैं, वी यूज द एक्सप्रेस स्ट्रेटजी, मेन यूज द एस्केप स्ट्रेटजी. कमिंग टू द पॉइंट, सबसे पहले चीज है कि हम रिएक्ट करते हैं, हमारा जो रिएक्ट करने का तरीका डिफरेंट होता है. इट फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट्स विद क्राइंग, देन शेयरिंग आउट, इमोशनल आउटबर्स्ट होगा, ठीक है. एंड आपको देखें बहुत सारे पोस्टमार्टम डिप्रेशन है जो कि विमेन से एसोसिएटेड है, मेनी अदर डिप्रेशन दैट आर एसोसिएटेड विद विमेन, जस्ट क्योंकि खवातीन हमारी जो कंट्री में है, हमारे एशियन कम्युनिटी में बिलोंग करती हैं, दे एक्सप्रेस व्हाट दे गोइंग थ्रू, इमोशनल टर्मोइल, ठीक है, मोस्ट ऑफ द विमेन. Acha, what male used to do, what male are doing, basically they use escape strategy. That is a very interesting fact, and that is coming home lately to avoid the situation, working out gym lately, and usage of alcohol or pills I would say in both cases. And this is the thing, both cases, just like अगर मैं example अभी आपको दूं कि how women react differently. जैसे कि अभी सब इंस्पेक्टर का एक केस हुआ था कि she chose suicide over being called divorce. So this is how our women reacting. So this is how biologically and psychologically says that women tend to react differently from men when it comes to depression, when it comes to any mental health issue. All right. Yeah. So coming towards हमारा जो आज का टॉपिक है social causes. So ऐसे कौन से social causes हैं या ऐसे major कौन से social causes हैं जो lead करते हैं depression को औरतों? देखें, अगर आप सोशल कॉजेज की बात कर रही हैं तो आई टेक यू द सोशल प्लेटफॉर्म, सोशल मीडियम, सोशल मोड. सबसे पहले मेरे से क्वेश्चन आता है, किसी भी प्लेटफॉर्म पे हूँ, पॉडकास्ट पे हूँ, व्हाई वी गेट डिप्रेस्ड? द वन आंसर इज द फियर ऑफ बीइंग गेटिंग जज्ड. वी हैव द continuous fear of being getting judged. Mariam, look, once we step out of the door, regardless of the gender, once we step out of the door, everybody is going to judge you. What you're wearing, who you're talking to, who you're not talking to, what you're eating, your relatives, your friends, your own family members are judging you. And there is a high moment, like there's a okay. And there's a difference between sympathy and empathy. People are more sympathetic toward people. आपके प्रॉब्लम्स को सुलझाने के लिए वो और मजीद प्रॉब्लम लेके, ओहो तुम्हारे साथ ये सब कुछ हो गया, ये नहीं होना चाहिए था, अच्छा इस तरह, और वो बंदी और डिप्रेशन में चली जाती है. अगर आप सोशल प्लेटफॉर्म की बात करें, देखिए अगर इतने हजारों ट्विटर पे और फेसबुक पे इतने बड़े बड़े मैगजीन, अगर सजल अली और राहत ज़मीर की बात करें तो मैं ही बात करूंगी कि the thing is कि empathy is towards Sajal more right now. Women towards towards movement is more right now. अभी जिस तरह की मैं एग्जांपल दूंगी, मैं वो रिलेटेबल एग्जांपल दे रही हूँ ताकि ऑडियंस रिलेट कर सके. अभी ही उसने कल रात एक्सपो पे एक guest appearance दी, and people start shouting and yelling Sajal, and he handled it so well, like thank you, and then he moved on to the conversation he was invited to and referred to. And अब इस टाइम देखेंगे कि प्रेशर जो है सजल पे ज्यादा है. अच्छा, उसने उसको फॉलो किया नहीं किया, अनफॉलो किया नहीं किया, मतलब it's very easy for men. I'm sorry, it's very easy for men to move on. So the thing is that social causes are actually promoting more depression in women. So people are more like judgmental. ओ तुम्हारे साथ ये कुछ हो गया, ओ तुम्हारी डिवोर्स हो गई, मतलब we need to stop stigmatizing and labeling things. It's destroying other people's life. So this is and yes, the sub inspector case, she chose मतलब famously like suicide over being called divorce. के लोग क्या कहेंगे? उसकी 2 बेटियां हैं, वो अपनी मदर को वसीयत लेके गई है कि मेरी बच्चियों की शादी किसी इंसान से कराना. क्यों? क्योंकि वो सोसाइटी को फेस नहीं कर सकती. हमारी सोसाइटी इतनी सपोर्टिव ही नहीं है कि वो सब डिवोर्स नाम को भी हैंडल कर सके.
So this is the thing, Mariam. Yeah. राइट सो व्हाट अदर सोशल कॉजेज? ये तो हो गया ना, डिवोर्स हो गया, शादी हो गई, ये सब हो गया। और किस टाइप के सोशल कॉजेज आपको लगते हैं जिसकी वजह से डिप्रेशन औरतों में बढ़ता जा रहा है? अच्छा, और जिस तरह के और सोशल कॉजेज में अगर आप कहूँ कि हमारे मीडिया में जो कंटेंट दिखाया जाता है, ठीक है, वो कहते हैं ना व्हाट यू ईट व्हाट यू दैट यू बिकम, व्हाट यू सॉ दैट इज एक्चुअली यू आर इम्प्लीमेंटिंग इन योर लाइफ। आप व्हाट यू हेयरिंग, व्हाट यू वाचिंग, एवरी डे यू आर हेयरिंग न्यूज, द कंटेंट बेसिकली। आप देखिए, आप एक टेक्नो वर्ल्ड में इस टाइम हैं, ठीक है, यू आर अ सेकंड अवे फ्रॉम मी, लाइक बाय मैसेज और फोन, राइट? सो दिस इज अ टेक्नोलॉजी वर्ल्ड। हम मीडिया में आए रोज देखते क्या न्यूज है, मीडिया हमारे ड्रामाज हैं। आप अभी कल परसों एक ड्रामा था जिसमें सास ने कही इसने कपड़े कैसे पहने, उसने इसको थप्पड़ लगा दिया। मतलब आप क्या दिखा रहे हैं? आप मतलब व्हाट यू प्रमोटिंग, ठीक है? अब ड्रामा कंटेंट, बेशक आप अगर आप रूरल एरियाज की बात करें, रेडियो, अब आप कहेंगे ना कि तो अर्बन एरियाज की बात करें, यहाँ टीवी है, सब कुछ है, वहां कुछ नहीं, वहाँ रेडियो है, तो मोट हेल्दी स्टफ कंटेंट आप क्या दिखा रहे हैं? मतलब डिप्रेशन को आप मजीद प्रमोट कर रहे हैं। सो दीज आर द सोशल कॉजेज। अगर आप सोशल कॉज करें तो सोसाइटी आती है, उसमें एक्सटर्नल फैक्टर्स आते हैं। एक्सटर्नल फैक्टर में आपके आपके फ्रेंड्स आते हैं, आपके सोशल सर्कल आते हैं, सेलिब्रिटीज आते हैं जिनको फॉलो करते हैं, पॉलिटिशियंस आते हैं, पूरा आपका पूरा एक्सटर्नल फैक्टर आता है, पूरा आपका बबल आता है, ठीक है, जिसको फॉलो करते हैं। सो दीज आर द सोशल कॉजेज दैट्स मतलब अगर आप टीवी पे भी देख रहे हैं, मतलब पीपल आर, जब वो एक the drama was over, I don't remember the name of the drama because I'm very fond of Pakistani drama, मतलब very few of them, but the drama was over, people were crying. Abhi recently one a fan of Sahat passed away. Sorry, I took that into heart as well. They broke up. I don't know that the news is not confirmed, but अभी मैं आप इसे join करने से पहले I was the one fan passed away and he could not, or he or she could not handle the pain. Look where we are going to. दुनिया मार्स पर 5,000 और प्लैनेट्स डिस्कवर हो चुके हैं एंड वी गया, इट्स जस्ट सही हो गया। मिजरेबल ऑलराइट, मिजरी। तो अब मेजर हमारा जो टॉपिक था वो सोशल कॉजेज थे, तो सोशल कॉजेज आ रहे हैं सोसाइटी से। तो जी, सोसाइटी का इस सब के अंदर क्या रोल है, एंड व्हाई डू वी लेट सोसाइटी इन्फ्लुएंस आवर लाइफ सो मच कि इतना उनका इन्फ्लुएंस बढ़ जाए कि हमें डिप्रेशन की तरफ जाना पड़े, हमें एंजाइटी हो, हमें पैनिक अटैक्स आए सोसाइटी की वजह से? तो इतना हम देखिए सोसाइटी फर्स्ट ऑफ को ऑल क्यों इन्फ्लुएंस करने देते हैं? क्योंकि मरियम, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू टेल मी कि व्हाट इज सोसाइटी। यू देयर आर टू टाइप ऑफ सोसाइटी, इंटरनल सोसाइटी एंड एक्सटर्नल सोसाइटी, right? Both are affecting us in various way. Internal society, I'll call your parents and your siblings. That is your internal society. I'll not include the relatives. They are external society. They are judging you. So अगर इंटरनल सोसाइटी है आपका, जैसे हम कहते हैं पेरेंट्स और सिबलिंग, इमोशनल सपोर्ट सिस्टम, वो आपका बहुत अच्छा है। यू नो, किसी बिल्डिंग का अगर आपने बिल्डिंग बनाया तो यू मेक श्योर कि उसके पिलर स्ट्रांग हैं। अगर उसके पिलर स्ट्रांग है, दिस बिल्डिंग इज नॉट गोइंग टू क्रैश और फॉल अपार्ट, राइट? अगर आपकी उस बिल्डिंग के पिलर स्ट्रांग नहीं है, आपका इमोशनल सपोर्ट सिस्टम जो घर से स्टार्ट होता है, तो कहते हैं ना चैरिटी ऑलवेज बिगिन फ्रॉम द होम। सो इमोशनल सपोर्ट सिस्टम ऑलवेज बिगिन फ्रॉम द होम, बिकॉज वेयर यू हैव बीन ब्रॉट अप। आपके पेरेंट्स सपोर्टिव नहीं है, आपकी फैमिली सपोर्टिव नहीं है कुछ मामला में। देखिए, मैं अगर वी आर नॉट अलाउड टू ब्रीच द कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ एनी क्लाइंट, बट लेट मी टेल यू वन थिंग, मोस्ट ऑफ द क्लाइंट youngster coming to me that we are taking therapy because our family is not supportive and they don't know about it. What is it? The family is not supportive. So this means internal society is completely not supportive. अब अगर एक्सटर्नल सपोर्ट उसकी सोसाइटी की बात करें, मैं बात कर सकती हूँ कि बहुत से, अगर आपके पास 10 सर्कल्स ऑफ 10 फ्रेंड्स हैं, उनमें 2-3 लोग आपके क्लोज हैं एंड देयर, मेरी बात करें, आई हैव लाइक वन फ्रेंड like for almost 21 years. She's very close to me and I can share everything with her. Mariam, can you hear me? Hello, You Mariam, know, can you hear me? हाँ जी, it's clear now. Yeah. So yeah. So the thing is, both internal society and external society can be supportive and can be not be supportive, and if they are not supportive, you have to face the adverse effect and worse consequences. सही हो गया। They're So playing, how, society is basically playing a great role on your mental health, in short. alright, so I completely agree. तो यहाँ पे अब how can women tackle these issues? अब आ जाते हैं हम उस साइड के ऊपर कि सबका सोल्यूशन क्या है, अब इस डिप्रेशन से कैसे निकला जाए, अब इस सबको टैकल कैसे किया जा सकता
देखिए इसको टैकल ऐसे किया जा सकता है कि मरियम, इफ अगर आपको पता ना कि आपके इश्यूज, आपके प्रॉब्लम 70% है और 30% आप उनको आइडेंटिफाई कर लें कि व्हाट इज द रूट कॉज, आपके 100% जो है ना प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे. जस्ट आइडेंटिफाई योर ट्रिगर्स, आइडेंटिफाई द रूट कॉज. देखिए बहुत सी ऐसी चीजें हमारी, मैं अपने क्लाइंट्स को भी चीजें बताती हूँ, अपने के लोगों को बताती हूँ, बहुत सी ऐसी चीजें जो हमारे अनकॉन्शियस सबकॉन्शियस में चल रही होती हैं और जब वो सरफेस पे आती है तब इमोशनल आउटबर्स्ट होता है. ठीक है, तो जब आप एक जगह मैं पढ़ रही थी, एक बुक अभी मैंने कंप्लीट की, उसमें लिखा था कि इंसान की सबसे बड़ी मतलब जब एक कंप्लीट इंसान, सबसे बड़ी सक्सेस ये है कि जब उसे पता चल जाए कि उसके स्ट्रेंथ्स और उसकी वीकनेसेस क्या हैं, वो एक कंप्लीट पर्सनालिटी बनती है. यू नो, एक्सपीरियंसिंग अ नेगेटिव एक्सपीरियंस इज इटसेल्फ अ पॉजिटिव एक्सपीरियंस. आपने जिंदगी में एक नेगेटिव एक्सपीरियंस किया है, इट्स अ रूट टुवर्ड्स अ पॉजिटिव जर्नी. ठीक है, सो आइडेंटिफाई योर ट्रिगर्स. आप कहेंगे आप ट्रिगर्स की बात कर रही हूँ, व्हाट इज अ ट्रिगर, व्हाट इज अ ट्रिगर? ट्रिगर इज समथिंग कि फॉर एग्जांपल इफ मैं अपनी एग्जांपल लेती हूँ, आई हैव बीन थ्रू सम रफ बम्पी राइड, राइट, और ठीक है मैंने उसे ओवरकम कर लिया थ्रू, मेरे पास कुछ मोड्स थे, थ्रू थेरेपी, थ्रू समथिंग लाइक दैट. कुछ अर्से बाद मैं उस चीज को दोबारा विटनेस करती हूँ. सही, प्लीज. जी मरियम, कैन यू हियर मी? हाँ जी, हाँ जी, आई कैन हियर यू, प्लीज कंटिन्यू. ओके, तो मैं उस चीज को विटनेस करती हूँ तो रीलैप्स आ जाता है, दैट्स अ ट्रिगर. तो उसके लिए विमेन क्या कर सकती हैं, अपनी कोपिंग मैकेनिज्म को इम्प्रूव करें. मैं आपसे ये नहीं कह रही आप K2 पे चली जाए, मैं आपसे ये नहीं कह रही कि आप माउंट एवरेस्ट को फतह कर लें, मैं आपसे बिल्कुल नहीं कह रही घर बैठ, क्योंकि देखिए हमारे कंट्री में खवातीन के लिए ऑब्स्टिकल्स ज्यादा हैं, हर्डल्स ज्यादा हैं. हम प्रेफर करेंगे चुगताई लैब, शौकत खाना में बैठ के घर आके हमारा ब्लड का सैंपल ले जाओ, हमें जाना ना पड़े, क्योंकि हमारे इश्यूज हैं ऐसे. ठीक है, मर्दों के सही लिए इस बात तरह नहीं. आई एम सो सॉरी, दिस इज अ मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी. So just improve your thoughts process, improve your belief system, improve your coping mechanisms. Because वो एक इमेज है जो मैं आपके साथ शेयर भी कर सकती हूँ, उसमें बहुत सी वीरन जस्ट लाइक सेल्फ जर्नल. कुछ लोग कहते हैं हमें नहीं अच्छा लगता, कुछ मेरे क्लाइंट्स हैं जिनको लिखना अच्छा लगता था, वो जो उनके साथ हुआ वो लिखते थे, दे यूज्ड टू फील लाइट. एंड देयर वाज वन क्लाइंट हु wrote it for 6 months and after that he was the happiest person on the planet, right? So the thing is meditation, घर बैठ के आप मेडिटेट कर सकते हैं. आप यूट्यूब पे देख लें, कुछ भी नहीं भी देखनी, जस्ट डू व्हाटएवर यू वांट टू. एंड सेल्फ सोथिंग है, जो चीज आपको अच्छी लगती है, जस्ट ऑर्डर फूड पांडा, योर फेवरेट फूड, ऑर्डर योर वॉच योर फेवरेट कंटेंट. मतलब यू डिस्ट्रैक्ट योरसेल्फ, यू कैन डू अ लॉट ऑफ थिंग. लुक, मौत के अलावा ना जिंदगी में हर चीज का ऑल्टरनेट मौजूद है, हर चीज का ऑल्टरनेट मौजूद है. ठीक है, so the thing is that you just need to see the bright side of the picture. ऑलराइट, सही हो गया. तो अब हम आ जाते हैं थोड़ा सा इसके ऊपर कि अब डिप्रेशन हो गया औरत को. सो हाउ डज दिस अफेक्ट देयर एवरीडे लाइफ, उनकी प्रोफेशनल लाइफ, उनकी पर्सनल लाइफ? डिप्रेशन का इस सब के ऊपर कैसे इम्पैक्ट होता है, क्या इम्पैक्ट होता है और क्या किस तरह से वो अफेक्ट करता है सब? सबसे बड़ा जो इफेक्ट आता है ना, दैट इज सुसाइड. हमें सुसाइड करनी है. मैं उनको भी नहीं ब्लेम कर रही जो ये बात कहते हैं, मैं उनको ब्लेम कर रही हूँ जो कि इमोशनल सपोर्ट सिस्टम इतना वीक था कि वो उस बच्चा या बच्ची या इंसान को, ग्रोन अप एडल्ट को इस नहज पे ले गया कि वो सुसाइड के बारे में सोच रहा है, रादर देन फाइंडिंग सम अदर ऑल्टरनेट सोल्यूशन. क्यों? क्योंकि उसकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स ही नहीं है इतनी अच्छी. तो जो सबसे एडवर्स इफेक्ट आता है दैट इज सुसाइड. जो मेरे पास क्लाइंट आता है, 70% ऑफ देम दैट सेड टू मी दे वांट टू डू सुसाइड बिकॉज दे आर डन विद द लाइफ. एंड यू विल सी द न्यूज कि एक यंग बच्चा मैट्रिकुलेशन में मार्क्स नहीं आए, हॉस्टल में ही डिड सुसाइड, और सम बहू इनहेल्ड पॉइजन समथिंग क्योंकि डोमेस्टिक वायलेंस के कुछ इश्यूज से. ठीक है, हमें सुसाइड, पता है हमें सुसाइड बहुत अट्रैक्टिव लगता है, हमें लगता है ये स्केप है, इज द बेस्ट स्केप. एंड आई एम फीलिंग वेरी सॉरी फॉर ऑल दोस, स्पेशली एक सॉरी, इजीएस्ट वे आउट लगता है लोगों को. एग्जैक्टली. द थिंग इज कि एक मॉडल थी, आई एम फॉरगेटिंग हर नेम, आई एम सो सॉरी. शी वाज बीइंग साइबर बुलेड, शी वाज बीइंग साइबर बुलेड अ लॉट. एंड उसने उससे पहले एक दिन सुसाइड, उसकी सुसाइड से पहले एक दिन उसने टी शर्ट भी पहनी, प्लीज फॉर गॉड सेक स्टॉप दिस साइबर बुलिंग, इट्स अफेक्टिंग मी, माय फैमिली, आई हैव गॉट सन. Another day she did suicide. So the suicide and taking, inhaling poison, inhaling pills, this is the adverse effect. मेरा नहीं ख्याल कि 100 में से कोई 10 या 5% शायद आवाम हमारी होगी जो शायद एक पॉजिटिव साइड ऑफ
लाइफ देखती होगी कि देयर इज अ लाइट एट द एंड ऑफ द टनल. नो, 95% go for the suicide. I know मतलब people find it a best escape. I would say कि ये this is a बेस्ट escape है जहाँ हम प्रॉब्लम से भी आजाद हो जाएंगे. हालांकि लोग कहते हैं कि जो लोग सुसाइड कर लेते हैं वो मतलब पुरानी वो चीजें देखे कि तो जहन्नुम में जाएंगे, लेकिन मैं उन सब लोगों को ब्लेम करती हूँ कि जिसकी वजह, जिन लोगों की वजह से बंदे बंदी ने सुसाइड की, दे आर रिस्पॉन्सिबल, दैट पर्सन इज नॉट रिस्पॉन्सिबल. आई एम सॉरी टू से. राइट. तो जिस तरह से आपने बात की जिनकी वजह से रिस्पॉन्सिबल, तो हम एज अ सोसाइटी रिस्पॉन्सिबल हैं इन सारी चीज़ों के लिए. तो अब सोसाइटी जी. किस तरह इम्प्रूव कर सकती है, या सोसाइटी क्या चेंजेस अपने अंदर ला सकती है जिसका से हम हेल्प आउट कर सकें उन लोगों को जो डिप्रेशन से गुजरें या किसी भी और मेंटल हेल्थ इशू से गुजरे. देखिए मरीम, वी आर दैट सोसाइटी, वी आर दोज पीपल दैट आर आफ्टर सेलिब्रिटीज लाइफस्टाइल, दैट आर आफ्टर पॉलिटिशियंस. हम वो देखते हैं कि वो क्या पहन रहे हैं, वो क्या खा रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं. मेरे ख्याल से अगर ये सेलिब्रिटी जिसको हम बहुत अडोर करते हैं, रूरल एरियाज में चले जाए, अर्बन एरिया में आ जाए, जिन सेलिब्रिटीज को हम बहुत अडोर करते हैं, ये आए ओपन अप करें अपनी स्टोरीज के बारे में कि हाउ दे वेंट थ्रू एंड हाउ दे ओवरकम्ड, it can improved a lot of mental health situation in our country right now. You know, ये जो आज हम बात करें how it started, you don't know, remember that. I'll tell you, when Deepika Padukone opened up about her depression, you know, that there was a interview and the whole panel was sitting and she publicly opened about she was open about her depression. क्योंकि आपको पता है कॉन्फिडेंशियलिटी मेजर कोर है, ये इसमें डिस्कस नहीं किया किस वजह से हुई, बट शी उसने आगे अपनी एक एनजीओ खोली जिसमें आई थिंक लिव लॉन्ग लाफ ऐसे कुछ करके उसने खोली, जस्ट टू हेल्प द पीपल सफरिंग फ्रॉम द मेंटल हेल्थ इशू. दे शी ओपन अप आउट, एंड उसके बाद लोगों ने डिप्रेशन, मेंटल हेल्थ इलनेस को बहुत ज्यादा प्रमोट करना शुरू कर दिया, सपोर्ट को वो करना शुरू कर दिया. मैं कहती हूँ कोविड की हमने वॉर है ना, मैं कहूँगी वर्ल्ड वॉर 3, अगर हम इसको फाइट कर लिए बेशक 3-4 साल बाद, somehow we have managed to fight it. Somehow we are going to the market, we are not wearing mask and no security guard is asking us to wear a mask. So we can do this as well, but it would take some time, it will take a set of time. But ये जो कि हम, आपको मुझे कोई नहीं जानता, ये जो बहुत से जो रिनोन सेलिब्रिटीज हैं, उन लोगों को बहुत सब लोग जानते हैं, फॉलो भी करते हैं, ये आके अपनी स्टोरीज बताएं. बहुत से लोगों ने बताया, बट मैं वही कहती हूँ, स्टोरी गॉट फेम, द प्रॉब्लम रिमेन सेम. सो स्टोरीज बताएं, आगे बताएं कि हाउ दे ओवरकम. एंड उसके बाद मैं आऊंगी कि जिस तरह अगर मोबाइल है तो जिस तरह आपका पेज बहुत बहुत अच्छा काम कर रहा है. मैं देख रही थी कि फ्री थेरेपी सेशन, ऐसे प्लेटफॉर्म्स होने चाहिए जहाँ फ्री थेरेपी सेशन हो खवातीन के लिए. जिस तरह मेरे पैकेज में एक है कि मैंने एक अनलिमिटेड क्राइटेरिया रखा हुआ है. जिस तरह अगर आप इंटरनेशनल टाइम क्राइटेरिया दिखे ना, उसमें 45 मिनट इंटरनेशनल टाइम क्राइटेरिया क्लाइंट और थेरेपिस्ट का. मैंने अपने, क्योंकि हम पाकिस्तानी कौम है, वी बिलोंग टू ब्राउन फैमिली, वी हैव सो मेनी इश्यूज, तो मैंने एक अनलिमिटेड टाइम क्राइटेरिया पैकेज रखा हुआ है, ताकि जितना क्लाइंट ने इशू बोले ना, आई थिंक 45 मिनट से क्लाइंट, मेरा नहीं ख्याल पाकिस्तानी और ब्राउन फैमिली से बंदा बिलोंग करता है वो अपनी प्रॉब्लम्स कंप्लीट कर सकता है. नो, नॉट एट ऑल. तो मैंने उसे पैकेज रखा हुआ है. एग्जैक्टली. सो ताकि वो, और उसमें फिर वो कुछ है जो नहीं अफोर्ड कर सकते, तो फिर बजटरीज को भी मैनेज किया हुआ. देयर शुड बी मोर हेल्दी प्लेटफॉर्म दैट कैन प्रमोट मेंटल हेल्थ सपोर्ट. ठीक है, अगर आप अर्बन एरिया में हैं, आप देखें ड्रामाज दिखाए इस तरह के, जिस तरह एक कितने डिसऑर्डर है, किसी को नहीं पता कि पर्सनालिटी डिसऑर्डर क्या है, किसी को नहीं पता शिज़ोफ्रेनिया, स्किज़ोफ्रेनिया, व्हाट इज इट. एक ड्रामा बना था इश्क ज़हे नसीब. ठीक है, इस तरह के ड्रामास बनने चाहिए. इस तरह, और स्पिरिचुअलिटी, यू नो, मैं कहती हूँ कि जब हम पैदा होते हैं, हम इंसान से पहले मुसलमान हैं, इसलिए क्योंकि हमारे कान में, अगर हम मुस्लिम कंट्रीज की बात करें, हमारे कान में अजान दी जाती है. स्पिरिचुअलिटी पे ड्रामास बने जाएं. ठीक है, क्योंकि जब आपका ईमान ताज़ा होता है ना, आपका तवक्कुल स्ट्रांग होता है, आपको लाइफ और अच्छी नजर आती है. बिकॉज मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के उस पर कह रही हूँ. वो कहते हैं ना, इश्क हकीकी और इश्क जो है मजाजी, क्या इश्क हकीकी, मतलब मैं बात किया करती थी इसके बारे में कि व्हाट इज इट, बट व्हेन आई स्टार्टेड my journey and it took me 1 year, I explored myself, I explored my triggers, I explored what thing, and the spirituality, was the one thing that made me at peace and at pace. So I think इस तरह के ड्रामास भी बनने चाहिए, इस तरह का कंटेंट दिखाना चाहिए, इस तरह का कंटेंट सुनाना चाहिए. and our holy book, I think उसमें हर चीज का सोल्यूशन मौजूद है. So and again I would say, अगर एक अच्छी हेल्दी सोसाइटी, सपोर्टिव सोसाइटी है,
अगर वो एक अच्छे एक औरत को एक अच्छा इंसान और आगे अच्छी मदर बना सकती है, अच्छी औरत बना सकती है, तो आगे 100 जनरेशन अच्छी हो सकती हैं, 100 लोग अच्छे हो सकते हैं. It can somehow make a one good, healthy, supportive society and a community. If अगर एक औरत पे आप मेहनत कर लें, तो it can improve a No doubt. lot of people around her. No doubt. Absolutely no doubt. So we will now be taking questions from our viewers. If anyone has any type of question for Hira, please go ahead. कोई भी question. वैसे basically I believe कि बहुत सारी चीज़ें discuss हो गई हैं. You've shed light on so many important things, so many important topics. And what I believe कि जी content is very important क्योंकि हमारा interaction आजकल social media, digital media के साथ हमारा content, reaction, interaction ज़्यादा है. तो मीडिया पे जो चीज़ डिस्प्ले बिल्कुल होगी, मीडिया पे जो चीज़ दिखाई जाएगी, उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट आपकी लाइफ पे कहीं ना कहीं से आएगा. सो येस, आई कम्प्लीटली ऐसे एग्री ही विद यू कि कंटेंट से बहुत बिल्कुल. इम्प्रूवमेंट हो सकती है. मेंटल हेल्थ इश्यूज को अवेयरनेस फैलाने में भी, स्प्रेड करने में भी हेल्प आउट कर सकते हैं. सो One thing I लेट्स सी इफ want यू to हैव. add, यस प्लीज. you have मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगी. देखिए, मैं बहुत से सेलिब्रिटीज को अडोर करती हूँ. मतलब इसका मतलब ये नहीं कि मैं जनरली बात कर रही हूँ. जिस तरह मायरा खान ने एक हमारी कम्युनिटी की, उसने मैशन के नाम से स्टार्ट किया और उसके अंदर थेरेपी, डियर थेरेपिस्ट, क्या पोस्ट देखे तो उस पे आते हैं, डियर थेरेपिस्ट, आई वेंट थ्रू दिस एंड हाउ टू ओवरकम आई, इस तरह की चीजें, एंड शी herself in a recent interview with रबिया मुगेल, जो कि एक एंकर पर्सन है, उन्होंने शी रिवील्ड कि शी इज टेकिंग थेरेपी. शी टॉक्ड अबाउट हर डिवोर्स एंड शी सेड कि उस टाइम मैं हील नहीं कर सकी. नाउ मुझे आई एम हैविंग अ मस्कुलर प्रॉब्लम क्योंकि मेरी बॉडी कह रही उस टाइम तुमने हील नहीं किया, बट अ बॉडी इज नॉट एक्सेप्टिंग. सो इट्स वेरी necessary and mandatory to get healed at right time, because that time was like people are saying, I'm getting fat, I'm getting older. No, it's just a muscular problem, because that time when I got divorced, I didn't get a time to heal myself, and now my body is being affected. So she started the initiative of therapy, and Sanam Said had a kind of session, and 2-3 people came and they opened up about Mumna Mustasan opened about her depression, and Jugan Kazmi, many. So we need such people to talk more about depression and mental health issue. Yeah, that's the thing. एंड स्पेसिफिकली दोज पीपल जिनकी फॉलोइंग इतनी स्ट्रांग हो कि लोग एक्चुअली उनकी बात को Exactly. सुने, उनकी बात को समझ सके. Yeah, that's my point. Yeah. Right. So I guess we don't have any questions. शायद मैंने Anyone? इतना सा बोल दिया है तो सब कह रहे हैं कि शायद नहीं, actually बहुत we अच्छा have explain हो गया सब कुछ. I guess nobody's left with any sort of question. We yeah. actually asked, we actually put a post few days back जिसके ऊपर हमने लोगों से पूछा था कि क्या social causes हैं जिसकी वजह से you think depression बढ़ता है लोगों के अंदर. So one of the thing we get, and we actually hear this a lot, कि शादी क्यों नहीं हो रही, शादी कब होनी है. ये जो शादी वाला फैक्टर जी औरतों के अंदर ऑलमोस्ट हर दूसरे बंदी को सुनना पड़ता है बात, या कि शादी क्यों नहीं हो रही, या कि शादी कब होनी है. So this is one of the leading factors जिसकी वजह से depression बढ़ता है. So how would you जी. define that, or how would you address that? मैं फिर ये कहूँ, देखिए, this question is not going to stop in a century even. People would keep asking, aunties would keep asking when you're getting married, or if you're getting married, when you're going to have baby, or when you're going to have a second baby. These questions are not going to stop, believe you me. What can you Yeah. do is like just let go of the things. Sometimes you have to just, I know it's bizarre sometimes. And one thing I really want to give advice to all the women, all the girls out there: first make yourself financially independent. Once you are financially independent, then get married. I'm not against nothing against marriage, but the thing is, this is my advice, because I've seen people: first make yourself financially independent, then get married. Then probably you won't be getting a question when you're getting married or something like that, or because you never know. Divorce rate, the prevalence of divorce, prevalence of khula is increasing day by day in our community. God knows what are the reason, but make yourself financially independent, कि खुदा न खासा कि कोई ऐसी सिचुएशन होती भी है, आप अपने पाँव पे खड़े हो, आप कुछ कर सको. Being a single parent, being a divorcee, something not to get worried about, or something not to be कि ये टैबू है और मुझे लोगों से छुपना है. ठीक है, तो ये क्वेश्चन तो आंटीज नहीं स्टॉप करेंगी. यू जस्ट नीड टू, मैं ऐसे चीजों को, जब मेरे पास क्लाइंट्स चीजें लेकर आते हैं, तो मैं कहती हूँ कि ट्रीट देम लाइक पेशेंट इन योर हेड. हम पेशेंट के साथ क्या करते हैं
क्या करते हैं, but for example there's एक patient, उसका paralysis हुआ है, he cannot or she cannot go to the washroom by himself, we'll give flowers to the patient, हम उससे अच्छे से बात करेंगे, हम उससे argument नहीं करेंगे. So treat those people like patient in your head. Okay, आंटी जब मतलब the thing is कि okay, when the time would be destined, definitely I'll get married that time. You don't, उसको दिल से नहीं लगाना. Improve your, coping statement होती है. मेरे मोबाइल में एक coping statement है regarding my father, because I lost my father back in 2017. I'm a person, apart from therapist, I'm a person too. I went through the depression. I have written down on my website that I was diagnosed with a clinical depression. My psychologist said to me that put a coping, what you would be a strong coping statement that can help you in any situation. So मैंने मेरे पेपर पे था, and I was like, Allah is with you and Papa is watching you from the sky, so just keep moving, and believe you me, पहले वो मैं येलो नोट्स अपने वॉल पे लगाती थी, देन मेरे वो मोबाइल में रात के 12 बजे भी बजता है, सुबह के 12 बजे भी बजता है. Giving me self affirmation is very very healthy, and self talking is sometimes very healthy. अगर इस तरह की सिचुएशन से आप कर रहे हैं ना, self talking is very healthy. अगर आप अकेले में बैठे हो and you're answering to yourself, अच्छा ये भी हो सकता है, pros and cons, it's completely healthy. There's nothing wrong with you. So yeah. All right. So thank you so much. I guess we should end it here because we don't have any questions from people. और ऊपर किसी ने लिखा भी है कि आपने इतना अच्छा explain कर दिया कि questions की जरूरत नहीं पड़ रही. Oh, I achieved another milestone. Right. So thank you so much, Hira, for joining us, for giving us so much of your time. बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा, बहुत informative session रहा, and I'm pretty sure लोगों को बहुत help out होगी जो इस live session को बाद में भी repeat में भी देखेंगे. Also, if there's anything you would like to add at the end. I just want to add, please, according to the sorry, I'm talking about lots of research, but जो हमारी ऐसी जनरेशन है उनका लाइफ स्पेन 50 है, so I have spent more like half of it. So please, थोड़ी सी जिंदगी रह गई ना, वो खुशी से गुजार लें, हंसी खुशी गुजार लें. मतलब सुसाइड एंड मौत इज नॉट अ सोल्यूशन. उसके अलावा हर चीज का सोल्यूशन मौजूद है, हर चीज का ऑल्टरनेट मौजूद है. आप प्लीज आप मुझे मैसेज कर दें, अगर आपको कोई प्रॉब्लम, कोई इशू आ रहा है, मुझे मैसेज कर दें. I'll tell you the solution to the problem. But please stay happy, because life is very short. You never know who's gone in the next moment. Please stay happy and try to make your surrounding happy as well. सही हो गया. So I guess we all agree with that, and I really hope that people start acting on this message of yours. So thank you so much again. Inshallah. We'll be back with another interesting topic next week. Until then, please stay happy, like Hira said. And there's always another reason to be happy. ढूंढे उन reasons को ढूंढने की कोशिश करें. You'll always find something that can make you happy. So putting aside the negative thoughts, we'll be back with another topic really soon. So stay tuned till then. Thank you so much. Allah Hafiz. Thank you, Mariam. Bye bye.